নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বৰ্তমান সময়ত এইটো তৃতীয়টো ঘটনা যে 2024 বৰ্ষৰ সামৰণিৰ ফালে এইটো তৃতীয়টো ঘটনা আৰু তৃতীয়টো ঘটনা হোৱাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰহস্যজনক নীৰৱতা এটা দেখা গৈছে। এতিয়া ঘটনাটো কি? ঘটনাটো হ'ল যে শেহতীয়াকৈ আমি দুটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল। দুইটা বাতৰিত কৈছিলো যে ডিমা হাছাওৰ অন্তৰ্গত যিখিনি জনজাতীয় মানুহ আছে সেইখিনি ভূমি কাঢ়ি তেওঁলোকক ভূমিহীন কৰি তাত এতিয়া সিমেন্টৰ কাৰখানা বহাবলৈ চৰকাৰে উঠি পৰি লাগিছে আৰু তাৰ বাবে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে চৰকাৰে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে সিমেন্টৰ কাৰখানাটোৰ মালিক হ'ব গৌতম আদানী। এতিয়া কথাটো হ'ল সেই ঘটনাবিলাকত আমি তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছত প্ৰথমটো ঘটনাত কিছু তৎপৰতা দেখা গৈছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টো ঘটনাত কোনেও মাত নিদিলে। হয়তো সকলোৰে অংকবিলাক মিলা নাই, সেইকাৰণে মাত নিদিয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল ঘটনাটো কথাখিনি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আমি আজিৰ পৰা 13 বছৰ আগৰ বা তাতোতকৈ আগৰ এটা গান, বিশেষ গান, সেই গানটোৰ কিয়ল অংশ আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছো। তাৰপিছত আমি কাহিনীটো ক'ম। কথাটো হ'ল এই গানটোত যিখিনি কথা কৈছে, গোটেই গানটো শুনিলেও আপুনি গম পাব এই গানটোত যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি এতিয়া আখৰে আখৰে অসমত সংঘটিত হৈছে। कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, उनको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। मंत्री बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, उनको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। এটা ঘটনাটোৰ বিৱৰণ কি? ঘটনাটোৰ বিৱৰণ আমি দিয়াতকৈ আজি আমি সম্পূৰ্ণ গোটেই ফুটেজ আমি ৰাজহুৱা কৰিব গৈ আছো যে শেহতীয়াকৈ উমৰাংচুৰ অঞ্চলত ডিমা হাছাওৰ অধীনৰ উমৰাংচু অঞ্চলত আদানীৰ এটা সিমেন্ট কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে উঠি পৰি লাগিছে। চৰকাৰে ভূমি দিছে। প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত এই সিমেন্টৰ কাৰখানা হ'ব। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত সিমেন্টৰ কাৰখানা নিৰ্মাণৰ বাবে তাত জৰীপ চলাবলৈ গৈছিলে বন বিভাগ তথা স্থানীয় প্ৰশাসন তথা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। তেতিয়া ৰাইজৰ লগত প্ৰথম সংঘাত সৃষ্টি হয়। সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়টো ঘটনাত সেই ডিমা হাছাওৰ এজন কাৰ্যবাহী সদস্যই সেই সিমেন্ট কাৰখানাটোলৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পথ এটাৰ জৰীপ চলাবলৈ গৈছিল উমৰাংচু অঞ্চলত। য'ত সিমেন্টৰ কাৰখানাটো হ'ব তালৈ যাব পৰাকৈ এটা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ডিমা হাছাওৰ যিগৰাকী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্য আছে তেওঁ গৈছিল। যাওঁতে তাতো স্থানীয় ৰাইজে বাধা দিয়ে, জনজাতীয় মানুহে বাধা দিয়ে আৰু তেতিয়া তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যি বন্দুক আছিলে সেই বন্দুক উলিয়াই তেওঁ ভাবুকি দিয়ে আৰু সেই দৃশ্যাংশ যিসকল ৰাইজে বন্দী কৰিছিলে সেই ভাবুকি দিয়া দৃশ্যাংশ সেই ৰাইজৰ মোবাইলসমূহ ভাঙি পেলাই তেওঁলোকক মুকলিকৈ ভাবুকি দিয়া। এতিয়া কথাটো হ'ল সেই গোটেই বিৱৰণীটো বা আপুনি এটা কথা গম পাইছে যে যিখিনি অঞ্চলত চিমেন্টৰ কাৰখানা স্থাপন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে সেইখিনি দুৰ্গম অঞ্চল। সেই অঞ্চলটোত সেই স্থানীয় জনজাতীয় মানুহখিনিয়ে বসবাস কৰি আহিছে, তাৰ সঠিক ঘাইপথো নাই। কিন্তু কথা হ'ল সেই জনজাতীয় মানুহখিনিয়ে সেইখিনি নিজৰ মাটি, কিন্তু তাৰ পাছতো তাত জোৰ জুলুমকৈ চিমেন্টৰ কাৰখানা বহুৱাবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এতিয়া 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন এটা নতুন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के हम पब्लिक की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द ये केस तो मतलब सॉल्व होना पड़ेगा। যে 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন ৰাইজৰ লগত আলোচনা চলি থকা অৱস্থাতে বুদ্ধি কৰি সেই অঞ্চলটোত ড্ৰোনেৰে জৰীপ চলাইছে চৰকাৰে। ৰাইজক মিটিংখনত ব্যস্ত ৰাখি তেওঁলোকে ভূমি জৰীপ চলাইছে আৰু সেই কথাটো গম পোৱাৰ পাছতে ৰাইজে তাত বাধা দিছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। হাফলঙৰ বা ডিমা হাছাওৰ এটা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম NAH হাফলঙে এটা ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰিছে। যিহেতু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে এই কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই, গতিকে আমি সেই NAH হাফলঙৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো আমি পুনৰ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বিচাৰিছো। এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ মন কৰক। স্থানীয় ৰাইজক কেনেকৈ জোৰ জুলুমকৈ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা ভূমি কাঢ়ি তাত চিমেন্টৰ কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। স্থানীয় ৰাইজক মিটিংখনত ব্যস্ত কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ভূমি কাঢ়ি লোৱাৰ ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতো জাতি ঠিকাদাৰসকল মনে মনে আছে। যিসকলে সোণাপুৰৰ কচুতলিত গৈ চিঞৰি চিঞৰি হুংকাৰ দিছিলে, জনজাতীয় মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ কৈছিল, সেই মানুহখিনিয়ে এই কথাবিলাকত মাত নামাতে। সেই বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল যি কথাই প্ৰতি বিজেপিক আক্ৰমণ কৰে সেই বিৰোধী দলে কিন্তু এই কথাবিলাকত মাত নিদিয়ে। আৰু এই গোটেই কথাখিনিত আমি আপোনালোকক আৰু বিস্তৃতকৈ কথাখিনি কোৱাতকৈ আমি দুটা ভিডিঅ' আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে এই গোটেই দুইটা ভিডিঅ' চালে গম পাব যে আমি প্ৰথমতে ৰাজহুৱা কৰা গানটোৰ লগত এই কথাখিনি সম্পৰ্ক আছে নাই, যে এতিয়া থলুৱা জনজাতীয় মানুহখিনিৰ ভূমি এটা কাঢ়ি ল'বলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে, কাঢ়ি লোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তাত
মুখ্য ভূমিকা লৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন কাৰণ অসমত বৰ্তমান সময়ত বিৰোধিতা কৰা মানুহ নাই বিৰোধী নাই কোনো জাতীয় সংগঠন নাই যি এই মানুহখিনি ৰক্ষা কৰিব গতে ৰাইজে ভিডিঅটো চাওক আৰু এবাৰ ভাবি চাওক क्या पब्लिक से हाथ उठा रहे हैं क्या? इंटरनेशनल में जाने वाला है मारो ना बाल इधर बोला ड्रोन नहीं उड़ा है इधर उड़ा रहा है जी जल्दी गो देखो ड्रोन उड़ा दिया बोला गाँव में मीटिंग करके यहाँ पे हम लोग गेट में Sir, we are doing our job, sir. पे छोड़ के जाना है, पे छोड़ के जाना है, मार देगा अभी। 10 मिनट और 2 मिनट सर बोला है कि ड्रोन नहीं चलेगा, ठीक है।
गाँव का सर इतना धोखाधड़ी कॉपी करके ट्रांसफर कर गया। अरे भाई 2 मिनट का तो हुआ ही है, क्या उसमें कॉपी करेगा? फोटो आया है आजकल तो डिजिटल है, सब कुछ कर सकते हैं। ये समझता हूँ गाँव का सेटअप है ना, थोड़ा बातें होगा, उसके बाद में जो भी हमको मालूम नहीं ना कौन सा पब्लिक देखो पब्लिक लोग ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगा, हमसे सेटिस्फाई होगा, पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होगा तो देखा जाए हम लोग सब दिल्ली देखो अच्छा से हुआ था। आज में हम लोग का गांव में मीटिंग रखा, एक बोरो लखीमपुर थरवेलांग सोन छोटो लखीमपुर हम लोग को मीटिंग बुलाया, तो हम लोग भी आया। पूरा ये माइनिंग नहीं होने के लिए, माइनिंग नहीं होने के लिए बड़ा बड़ा आदमी लोग भी आया, EM CM एक्स EM CM जितना है आया। वहाँ पे हम लोग को मीटिंग चलते हैं, गांव में मीटिंग होते हैं। तो वहाँ पे मीटिंग रखने के बाद तो यहाँ पे लेकिन पुलिस फोर्स तो आ चुका है, 50 जन ऐसे होगा। हाँ, तो इसके बाद तो हम लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला, मीटिंग में बैठ के, मीटिंग में जब हम लोग बैठा था इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे तो ड्रोन उड़ा रहा है। हम लोग डर मार के आया कि हम लोग को सांस लेने की भी तकलीफ हो गया। फिर भी हम लोग यहाँ पे आने के बाद तो हम लोग को पुलिस लोग ने रुका के रखा कि आप लोग का ड्रोन नहीं उड़ा रहा है, वहाँ पे रुकिए। वहाँ से इंफॉर्मेशन मीटिंग चल रहा है ना, सार लोग आने के बाद आप लोग को घुसाने देगा। तो हम लोग जबरदस्ती किया कि हम लोग को घुसाओ, तो वो लोग से बोला कि खाली ओनली 2 जन के लिए अलाउड होगा, 2 जन के लिए अलाउड होगा बोल के बोला। तो ठीक है, हम नहीं घुसना है तो हम लोग ऑल विलेजर घुसेगा। फिर भी नहीं मान रहा है, 2 जन ओनली, तो 2 जन को भेजा है। क्यों घुसने नहीं देता आप लोग को? वो लोग बोल रहे कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन मीटिंग चल रहा है ना। और फिर बोला कि वहाँ में भी मीटिंग चल रहा है, क्या का मीटिंग, ये बोला ये भी हम लोग बोला। हाँ, ये भी बोला है जंगल में भी मीटिंग चल रहा है, आप लोग को बाद में घुसने के लिए अलाउड देगा। फिर भी अलाउड नहीं दे रहा है, तो 2 जन को अलाउड मतलब जबरदस्ती घुसाया। तो जाके देखा तो कब से ड्रोन तो उड़ा चुका है। हम लोग को वहाँ पे तो ड्रोन जानने के बाद तो देखा कि ड्रोन तो उड़ा रहा है। तो हम लोग जाके तो हम लोग बोला कि ड्रोन को नीचे नमाओ, तो भी नहीं नमा रहा है। फिर भी हम लोग पूरा एक गाँव मतलब से लेके असम का जो हमारा चीफ मिनिस्टर से लेके ये पूरा ये सोल्यूशन निकालना होगा। हमारा यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट का जो नंदिता मैडम है, जो हमारा MLA है, वो साथ मिलके हम लोग को ये सोल्यूशन पे जल्द से जल्द निकालना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को ये 6 शेड्यूल को बचाना है, लैंड को, ट्राइबल लैंड को अगर बचाना है, तो ये सोल्यूशन जल्दी से वो करना पड़ेगा। और ये माइनिंग तो शायद ये जगह पे कैंसिल होने से बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के मैं हम पब्लिक की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द ये केस मतलब सॉल्व होना पड़ेगा।